let me note it somewhere. पूर्वी, ओके, संभव, ओके, प्रखर, मुस्कान, अदिति, ओके, प्रियांशु, दक्ष, 9, ओके, वैष्णवी भार्गव, 9, शिवम पारिक, 10, ओके, आफ्टर दिव्या, 9, स्वास्तिका, 9, आफ्टर स्वास्तिका, no one, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay, no one is there, all of us written Kusi Gupta, 9, okay, Kusi, 9, okay, anyone else is left? Okay. Okay, good. So minimum score is I think 9. That's good out of 15. Okay. So some errors, some mistakes will be there. Some entries may be wrong, or amounts in some entries may be wrong. Okay. So that's all right. So have you got the idea how to pass the entries or not, Sairam? Yes, sir. ठीक है. किस किसको Yes, अभी sir. Yes. एंट्रीज में किसको प्रॉब्लम बताओ मुझे भी. Our next topic is ledger. So one day I gave some introduction of ledger. So after journal, journal is the book of original records. In journal, the transactions are recorded for the first time. So this is called the books of original records. So whatever transactions take place in the business, they are recorded in journal or in subsidiary books. Subsidiary books we will discuss later in the next chapter. Okay, so transactions may be recorded either in journal or in subsidiary books. Both are called as books of original entry. Are you understanding? So journal or subsidiary books, also called day books. Day books. So they are called as books of original records or books of primary records. So as soon as any transaction take place, that is recorded in either journal or in day books or subsidiary books. Okay. So in these books, subsidiary books are the classification of journal because journal is a single book, and many times it is possible that all transactions could not be recorded in one single book. There may be a lot of load. Na? So it is almost impractical to record all the transactions in one book because only one person can record in one book. So that journal is divided into subparts, or these subparts of journal are called as subsidiary books. Okay, so for convenience in recording, journal is divided in many subparts. These subparts are called as subsidiary books. They are specialized books. So we classify it as purchase book, sales book, purchase return book, sales return book, cash book, general proper like that. So they are also the books of original records. So is it clear? So transactions are recorded first. Sairam?
First we prepare vouchers, that is called source document or vouchers. Then from vouchers, uh, what is the sequence? Basically, sequence is that first of all a transaction is recorded in source document. From source document, vouchers are prepared. From vouchers, the transactions are recorded in journal, and now from journal they are transferred to ledger. Is it clear? But in accounting books, first book is journal or subsidiary books, where the transactions are recorded for the first time. That's why these are called as books of original records. Okay. So is it clear? As soon as transactions happen, they are recorded in journal or in subsidiary books. In journal, the transactions are recorded in chronological order, in the order of their happening. In whatever order they are taking place, they are recorded in journal in the same order. Is it clear, Sairam? Sairam, am I there in the meeting or Yes, not? sir. Okay. Yes, sir. So now, if we see or if we correlate this process with the objectives of accounting, the first objective of accounting was to maintain a systematic record of transactions or financial transactions taking place in the business. That is the first objective of accounting. So that first objective is achieved when we record the transactions in journal or in subsidiary books. Okay, now we have systematic record, so we can remember these transactions for a long time. We will not forget. We have prepared a systematic record by recording these transactions in journal or books of origin records. Is it clear? But because journal is a mixed book, transactions are recorded in the order of their happening. So journal is not able to show the position of specific accounts. Position means balance in a specific account. So with the help of journal, we can remember the transactions, but we cannot know what is the balance in a specific account. Balance means debit balance or credit balance, because accounts have two sides, debit and credit side. So there may be, earlier also I have told you, there may be a debit balance in a account or credit balance or equal balance, no balance, that is both sides are equal. So if someone is our customer and we are dealing with that customer again and again, we are purchasing goods from him, we are supplying goods to him also, we receive payment from that person, we make payment to that person, and at a specific point of time we want to know what is the status of his account, means whether we have to receive money from that customer or we have to pay money to that customer, that we cannot know from journal. Or we have to go in the past all transactions, we keep on writing that this is the purchase, this is the sale, this amount is received, this amount is paid, and at last what amount is receivable or payable. That process, long process we have to do for each and everyone, then only we can come to know. So for that we go for the next stage, that is called classification. Now, at the classification stage, we prepare ledger accounts. So ledger is not itself a record, but ledger is a collection of accounts. Ledger is the book in which accounts are being prepared. No, so ledger is a collection of accounts. It's the book in which accounts are being prepared. Okay, ledger is the book in which accounts are being prepared. Okay. This is the book in which accounts are being prepared. So, okay, now I done the corrections. See, so what is the account? What we know, account is a systematic record of transactions related to a person or thing. मैंने बताया था ना आपको अकाउंट की डेफिनेशन, किसी को याद है क्या? जब हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे तो आपको बताया था. What is the account? Account is the systematic record of transactions related to a particular person or thing. Or when we record all transactions related to particular person at one place, that is called an account. So salary account, rent account, furniture account. So in salary account, all transactions related to salary will be recorded. Furniture account will record all the transactions related to furniture, like purchase of furniture, sales of furniture, depreciation charge on furniture,
Mr. Raman's account, so all transactions related to Mr. Raman. We sold goods to Mr. Raman, purchased goods from Mr. Raman. They all will be recorded in purchase account. Is it clear? Jairam. So, ledger is called book of secondary records because journal is the book of primary records and ledger is considered as the book of secondary record because in ledger whatever transactions we have recorded in journal they are being transferred. So it's a secondary data. It's not a primary or original data. It's a secondary data because whatever we have recorded in journal that is being transferred to ledger. So this process of transferring the entries from journal to ledger is called posting. What is the word? Term is the posting. No. So the process of transferring the entries from journal to ledger is called posting. This ledger is important because by preparing accounts in ledger, we can know specific status of different accounts. That is the limitation of journal. But here we can know what is the balance in a specific account by preparing the accounts. Second, this ledger balances helps in preparing trial balance. That is helpful in checking the accuracy of accounts, whether whatever accounting work we have done that is correct or not. That can be checked by preparing trial balance. So with the help of ledger balances, we can prepare trial balance and we can check the accuracy of accounts. Third thing is that with the help of the ledger balances, we can prepare financial statements, trading and profit and loss account, and balance sheet, so we can know profit or loss of the business, and we can assess the financial position of the business. Okay, that's why it's a very important book. It's the second stage of recording where transactions are divided, classified in separate accounts. Whatever transactions are recorded in journal, they are grouped under specific headings. Each heading is called an account. Okay. So first, let us see some video on this. Then we will continue with this ledger. Then ledger also we will practice journal. है ना? तो journal की practice उसमें भी होगी ledger में आपकी. Don't worry for that. We will continue with the practice of journal and ledger together. Now see this. Yes, please. सर बोलिए. सर जो प्रोसेस ये रिकॉर्ड करने की सर उसको क्या कहते हैं? Posting. POSTING. Process of transferring transactions from journal or subsidiary books to ledger is called posting. Now let us see this video. Introduction to the ledger. Recording of each transaction is done separately in the journal. Therefore, it becomes difficult to know the net result of many transactions for a particular account. A ledger is a book which is used to collect complete information on an account. It classifies transactions on the basis of accounts. For example, information on bank transactions can be obtained from the bank account in the ledger. The accounts in a ledger may be personal, real, or nominal. A ledger is used as the... This is the same classification as we have already discussed. Three types of accounts: personal account, real account, and nominal account. So that classification is same. Now all of you know which are the personal accounts, real accounts, and nominal accounts. Basis for the preparation of a trial balance. This I explained you. It Why it is important. One importance of ledger, I explained that it is helpful in knowing the status of specific accounts. With the help of ledger accounts, we can know what is the status of specific accounts. Second importance, I explained you this. It is helpful in preparing trial balance. With the help of ledger balances, we can prepare trial balance and we can check the arithmetic accuracy of accounts. That means whether the debits and credits are equal or not. Because in double entry system, debits and credits should be equal. In dual aspect concept, debits and credits should be equal. So that we can check by preparing trial balance with the help of ledger balances. Third thing, I explained you importance of ledger, that with the help of ledger we can prepare financial statement,
that is trading and profit and loss account, we can calculate profit or loss of the business. With the help of ledger balances, we can prepare these financial statements which are used to calculate result of the business. Here you can see net profit or net loss, whatever is the result of the business, that can be calculated with the help of ledger balances. And we can assess the financial position of a business using ledger balances by preparing the balance sheet. So we can prepare balance sheet with the help of ledger balances, and we can check the what we say financial position of the business with the help of ledger balances. That's why this is the importance of ledger. 4 points I explained. Number one, specific status of specific accounts can be known. Number two, arithmetic accuracy of accounts can be checked by preparing trial balance. Third, profit and loss can be calculated with the help of ledger balances by preparing trading and profit and loss account. And financial position of the business can be assessed by preparing balance sheet with the help of ledger balances. Okay, so let us see this, continue with this. Also facilitates the preparation of the final accounts of a business. Let us now look at the format of a I'm writing from here. This is the important part. That's why I'm doing this. This is the format of ledger. This format, not ledger. This is the format of account. This is the format of account. So you draw the columns. You all of you noted. So account has 8 columns. Here we will write the name of the account. Suppose capital account, furniture account, machine account, whatever is the account. So heading of the account, we have to write here name of the account. Are you understanding? So it's a T-shape account. This page is divided from the center. If you draw a line, long line here, then it will look like T. It will look like T. So it's a T-shape account. It has 2 sides, left hand side and right hand side. Can you see it? ledger account. The name of the account is mentioned above the format. The left side of the account is called the debit side. It is denoted by the abbreviation DR. The right side is called the credit side. It is denoted by the abbreviation CR. Okay, now is it clear? So it is divided in 2 parts. It is T-shape account. It has 2 sides. This left hand side is called debit side. Abbreviation is written debit as we are writing here. And this right hand side is known as credit side. Okay, so every account will have 2 sides, debit side and credit side. Are you understanding? Sairam? हाँ जी, कोई है क्या क्लास में? नहीं है? Sairam? Yes, sir. Is it clear? The format, you draw this format. What are the columns in a ledger account? Number 1, date, particulars, JF, general folio, amount or amount debit. Then date, particulars, general folio, amount or amount credit. Are you understanding? So 8 columns are there, 4 columns on the debit side, 4 columns on the credit side. Now in date column, we write the date, whatever date is written in journal. आप जिस दिन लेजर बना रहे हैं वो डेट नहीं लिखते हैं इसमें, कौन सी डेट लिखेंगे? जो जनरल में आपने डेट लिखी है, जो डेट ट्रांजैक्शन के साथ लिखी है वो डेट यहाँ पर आएगी. पर्टिकुलर का मतलब क्या होगा? We will write the name of account which we are going to debit, है ना? This is JF, जनरल फॉलियो, पेज नंबर ऑफ जनरल. जनरल के कितने पेज नंबर पर ये एंट्री थी वहां से हम लेके आए. That is page number of general. General folio, page number of general. Okay. And amount, whatever is the amount. If this account is to be credited, suppose this is the Ram's account. Let us assume a transaction. Suppose cash paid to Ram, rupees 10,000. What will be the entry? Cash paid to Ram. Entry bolo. Surprising, no one can say the entry. What is the entry? Very simple transaction. Cash paid to Ram. Ram's account debit to cash. Very good. Ram's account debit to cash account. Very good. Excellent. Now remember, every account, every transaction involves 2 accounts. सबको पता है. इस transaction में कौन-कौन से 2 account आए आपको? आपने जो entry बताई उसमें कौन? Personal and हाँ जी. personal and real account.
पर्सनल डीएल छोड़ो, पर्सनल डीएल की बात नहीं करना। आप पर्सनल नाम बताओ जो नाम लिखे आपने एंट्री में, किस किस का नाम लगा एंट्री में? राम। हाँ, नाम बताना है। वो तो आपको डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ रूल्स देखना है, उसके लिए पर्सनल डीएल को मन में रखना है। बट नाम कौन से आए? राम्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट। इज इट क्लियर? सो राम डेबिट कैश पेड टू राम मींस राम डेबिट टू कैश अकाउंट, टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व। तो आपने क्या किया, राम को डेबिट किया कि क्रेडिट किया? जनरल में क्या लिखा? राम डेबिट टू कैश अकाउंट लिखा, तो राम डेबिट हुआ कि क्रेडिट हुआ? डेबिट हुआ। डेबिट हुआ, ठीक है, Debit. समझ में आ रहा? अब ये अकाउंट है, इसमें डेबिट साइड कौन सी है? लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। Left तो one. इन द राम्स अकाउंट, इसका मतलब एंट्री मतलब क्या बोल रही है कि राम का अकाउंट डेबिट हुआ, तो राम को डेबिट करना है आपको, ये है ना मतलब इसका? राम डेबिट कैश अकाउंट, है ना? इसका मतलब होता है कि दिस ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ राम्स अकाउंट। समझ आया आपको? राम डेबिट टू कैश अकाउंट मतलब क्या हुआ? इन राम डेबिट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राम डेबिट और राम्स अकाउंट डेबिट मींस व्हाट? इट मींस दैट दिस ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ राम्स अकाउंट। इज इट क्लियर? And this is suppose Ram's Yes, sir. account, this is Ram's account, okay, and this is the debit side, ठीक है? तो राम के अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे? राम के साथ में जो अकाउंट आया वो लिखेंगे यहाँ पर। डेट में तो डेट लिखेंगे जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ, पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे? जैसे आपको आया राम डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट और अमाउंट लिखेंगे यहाँ पर। समझ में आ रहा है? तो राम के अकाउंट डेबिट हो गया, तो राम में राम नहीं लिखेंगे, राम तो ऊपर है ही हमारे पास, राम का तो अकाउंट है वो तो पता ही है। तो राम के साथ कौन सा अकाउंट आया? करस्पॉन्डिंग अकाउंट कौन सा है? कैश अकाउंट है। तो राम के अकाउंट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, दैट विल इंडिकेट दैट क्या किया था आपने, राम से परचेज किया था कि सेल्स किया था कि राम को कैश दिया था कि कैश पे किया, दैट विल बी हियर टू कैश अकाउंट। अब दूसरा अकाउंट कौन सा है ऐसी एंट्री में? कैश अकाउंट, ठीक है। तो कैश अकाउंट बनाएंगे अलग से एक और सेम, जैसे इसमें राम का अकाउंट बनाया, दूसरा अकाउंट बनाओ कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट क्या हुआ? डेबिट की क्रेडिट? एक Credit. क्रेडिट हुआ। क्रेडिट साइड कौन सी है? ये वाली है, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा कैश अकाउंट, दूसरा अकाउंट बनाया, ठीक है, कैश अकाउंट बनाया। कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड इधर है तो इसमें इधर लिखूंगा कैश अकाउंट में, ऊपर हेडिंग हो जाएगा कैश अकाउंट, और यहाँ लिखूंगा क्रेडिट साइड में बाय राम। कैश अकाउंट में कैश नहीं लिखूंगा क्योंकि कैश तो ऊपर ही आ गया यहाँ पर हेडिंग में। तो कैश अकाउंट के अपोजिट में क्या आ रहा है? कौन सा अकाउंट आ रहा है? राम आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय राम। तो इंडिकेट होगा कि ये कैश किसको पेमेंट किया, किसके लिए कैश किया, तो राम को पेमेंट किया हमने, तो राम में आ जाएगा। तो इंटरचेंज हो जाएंगे अकाउंट, है ना। जो अकाउंट जनरल में डेबिट हुआ वो लेजर में भी डेबिट होगा, जो जनरल में क्रेडिट हुआ वो लेजर में भी क्रेडिट होगा। समझ में आ गया आपको? राम डेबिट किया जनरल में तो राम डेबिट होगा नहीं, राम के डेबिट साइड में ही एंट्री करना है आपको। कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में एंट्री करेंगे, लेकिन राम के अकाउंट पर राम का नाम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? उसके करस्पॉन्डिंग जो अकाउंट है वो यहाँ आएगा। और कैश अकाउंट में कैश नहीं लिखेंगे तो कैश के करस्पॉन्डिंग में जो अकाउंट आएगा वो वहाँ आएगा। इज दिस क्लियर? पहले तो साइड को समझ लीजिए आप, कितनी साइड है इसमें? दो साइड है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। In each side we have 4 columns. Again this JF column as a student is useless for us, हमारे लिए इसका कोई यूज नहीं है, ये प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में काम आएगा। तो जिस पेज नंबर से आप एंट्री लाए हैं उसका पेज नंबर जनरल का यहाँ पर लिखेंगे। जनरल में ये वाला पेज नंबर लेजर का लिखेंगे, लेजर में पेज नंबर जनरल लिखेंगे। दिस इज कॉल्ड क्रॉस रेफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस रेफरेंस, है ना। पेज नंबर ऑफ जनरल इज रिटन इन लेजर एंड पेज नंबर ऑफ लेजर इज रिटन इन जनरल। दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस रेफरेंस। सो व्हेनेवर वी नीड टू चेक कितने पेज नंबर से हम एंट्री लाए थे, तो हमको पूरा जनरल नहीं ढूंढना, यहाँ पर पेज नंबर लिखा है, उस पेज नंबर पे जाएंगे जनरल के और वो एंट्री हम चेक कर सकते हैं। सिमिलरली लेजर में से कहाँ ले गए हम जनरल से उस एंट्री को, लेजर के कौन से पेज नंबर पर ले गए, सो दैट वी डोंट हैव टू टर्न ऑल द पेजेस, वी सिंपली सी द पेज नंबर दैट इज रिटन in the general and we will come to this page of ledger, so we can cross check that this is the entry which is recorded here, this was there in the journal on this page number, it is being brought here in the ledger. So that way it is helpful in cross reference in checking whenever we need to check the entries, and that work can be done easily. Okay, so for each and every person we have to prepare a separate account. क्या होगा अभी बताऊंगा, रूल्स ऑफ लेजर तब समझेंगे, अभी तो इतना फॉर्मेट समझ में आ गया आपको। Is this format clear? This is the format of ledger. This is the debit side. You don't need to write debit credit. ये लिखने की जरूरत नहीं है हमेशा, वो अंडरस्टूड है कि लेफ्ट हैंड साइड है वो कौन सा है? डेबिट साइड है,
राइट हैंड साइड है वो कौन सा है, क्रेडिट साइड है, ठीक है। ईच साइड हैज 4 कॉलम्स, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। डेट में जो डेट जनरल में वही डेट आएगी, पर्टिकुलर में इसके साथ का जो अकाउंट है वो आएगा, जेएफ में कुछ नहीं आएगा, अमाउंट में जो डेबिट अमाउंट है वो आएगा। Each side contains 4 columns. The first column contains the date. थोड़ा पीछे कर रहा हूँ दोबारा से इसको, Classifies transactions on the basis of accounts. For example, information on bank transactions can be obtained from the bank account in the ledger. The accounts in a ledger may be personal, real, or nominal. A ledger is used as the basis for the preparation of a trial balance. It also facilitates the preparation of the final accounts of a business. Let us now look at the format of a ledger account. The name of the account is mentioned above the format. The left side of the account is called the debit side. It is denoted by the abbreviation DR. The right side is called the credit side. It is denoted by the abbreviation CR. इस क्लास में 10 मिनट्स। Each side contains 4 columns. The first column contains the date on which the transaction has taken place. The second column, particulars, contains the name of the other account which is affected because of the transaction. The journal folio column contains... Okay, this is important, this is clear. What I am saying, we don't write, suppose Ram's account. So if we, in Ram's account, we will not write yet to Ram. We will write the name of other account which is being affected. So what account was affected? Cash paid to Ram. So cash account was the other account, or simultaneous account that will come here. So remember, the debit and credit will not change. This is very important concept you have to understand. जो अकाउंट जनरल में डेबिट हुआ वो लेजर में भी डेबिट ही होगा। आर अंडरस्टैंडिंग? सही राम? यस सर। तो जनरल में डेबिट होने का मतलब क्या होगा? लेजर में क्या करना है, उस अकाउंट के डेबिट साइड में उस ट्रांजेक्शन को लिखेंगे। जो अकाउंट लेजर जनरल में क्रेडिट हुआ वो लेजर में भी क्रेडिट होगा, इसका मतलब है उस अकाउंट में क्रेडिट साइड में उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। बट जो अकाउंट आप बना रहे हैं उसमें उसका नाम नहीं लिखते, क्या लिखेंगे? जो दूसरा अकाउंट अफेक्ट हुआ उससे उसका नाम आएगा। उस एंट्री में आपकी एंट्री हो गई कैश पेड टू राम, तो राम डेबिट टू कैश अकाउंट, तो दूसरा अकाउंट था हमारा राम और ये आ गया कैश अकाउंट। Means the page number of the journal where the transaction was originally recorded. The amount column contains the transaction value. Let's now look at the procedure of posting in the ledger. Posting is the process of transferring a transaction from a journal or a subsidiary book to the respective accounts in the ledger. This I have defined, posting I have defined. Let's post a simple entry in the ledger. First, you have to find the account which is debited in the journal. Then you have to enter the date of the transaction in the date column of the ledger account. Next, you have to enter the name of the account which is credited in the journal with the prefix to. In this case, we will write to cash account in the particulars column. The next step is to maintain the page number of the journal in the journal folio column. Finally, you have to write the amount of the transaction in the amount column. Posting on the credit side is done in a similar manner. The only difference being that the name of the account debited is prefixed with the word by. Let's now consider
entry in the ledger. First, you have to find the account which is debited in the journal. Then you have to enter the date of the transaction in the date column of the ledger account. Next, you have to enter the name of the account which is credited in the journal with the prefix to. In this case, we will write to cash account in the particulars column. The next step is to maintain the page number of the journal in the journal folio column. Finally, you have to write the amount of the transaction in the amount column. Posting on the credit side is done in a... Okay, now see, this is clear to all of you. This is perfect example, perfect explanation. You can understand what I am saying. Suppose in this entry is purchase account debit to cash account. So which account is debited? Sairam? Purchase account. ना इसका मतलब क्या हुआ? परचेज अकाउंट डेबिट होने का मतलब क्या हुआ? अभी क्या बताया था आपको कि परचेज अकाउंट डेबिट का मतलब जब लेजर में परचेज अकाउंट बनाएंगे तो ये वाला ट्रांजैक्शन कहाँ लिखेंगे? परचेज अकाउंट में डेबिट साइड में, है ना, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट है तो जनरल में डेबिट है, लेजर में भी डेबिट ही रहेगा वो। ठीक है, क्लियर है? अब ये आगे देखो, परचेज अकाउंट बनाया, हेडिंग क्या हो गया? परचेज अकाउंट, डेट यही है ट्रांजेक्शन की। आप परचेज अकाउंट में परचेज नहीं लिखोगे, दूसरा अकाउंट जो उसके साथ आया वो आएगा। इसमें क्या आ गया? सेकंड अकाउंट जो उसका साइमल्टेनियस अकाउंट है वो लिखेंगे कैश अकाउंट। यहाँ आ गया टू कैश अकाउंट 10,000। ठीक है, बस एक ही चेंज हुआ, परचेज अकाउंट तो हेडिंग है, परचेज में परचेज नहीं लिखेंगे, उसके साथ वाला अकाउंट आएगा। अब दूसरा अकाउंट कौन सा अकाउंट बनाया आपने? कैश अकाउंट। ये गलत लिखा हेडिंग है, ये दिस इज अ कैश अकाउंट, है ना, इसको कैश पढ़ो। ये परचेज दो बार नहीं बनेगा, परचेज एक ही बार बनता है। तो दिस अकाउंट इज द कैश अकाउंट। कैश अकाउंट को क्या किया? इस ट्रांजेक्शन में क्रेडिट किया। ये कौन सा साइड है? दिस साइड इज विच, डेबिट और क्रेडिट? सही राम? क्रेडिट। इसका मतलब कैश अकाउंट जो क्रेडिट हुआ जनरल में, लेजर में भी क्रेडिट होगा, यानी उसके क्रेडिट साइड में इस ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग करेंगे। लेकिन जैसे हमने परचेज में परचेज नहीं लिखा, परचेज के अपोजिट में कैश आया तो कैश इधर आ गया, वैसे ही कैश अकाउंट जब बनाएंगे तो कैश में कैश नहीं लिखेंगे, कैश के अपोजिट में क्या आ रहा है? परचेज आ रहा है ना, तो इसमें आ गया परचेज। और डेबिट साइड में अगर कुछ भी लिखेंगे तो टू लिखेंगे उसके पहले, और क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो बाय लिखेंगे। प्रीफिक्स टू एंड बाय आर यूज्ड इन टू इन द डेबिट साइड एंड बाय इन द क्रेडिट साइड। तो इस ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग हो गई, एंट्री की पोस्टिंग हो गई। कितने अकाउंट इन्वॉल्व है? दो अकाउंट, ये दोनों अकाउंट में इसकी पोस्टिंग हो गई, दैट्स ऑल, है ना, इसका लेजर पोस्टिंग हो गई है। अब परचेज कितनी बार भी आएगा, 50 बार भी परचेज आएगा तो परचेज अकाउंट कितने बनाएंगे हम लोग? हाउ मेनी परचेज अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड? सहीराम? only one account will be prepared for each person and each thing, है ना। We will prepare a separate account for each person and each thing, but for each person and each thing only one account will be prepared. एक ही अकाउंट बनाना है, हर एक का एक अकाउंट बनेगा, जितने भी आएंगे नहीं चाहिए उन सबका अकाउंट बनाना है, बट ओनली वन अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड। अब ऐसे परचेज अकाउंट एक ही बनेगा, सिमिलरली कैश अकाउंट एक ही बनेगा। कैश का 1000 ट्रांजेक्शन भी आएंगे तो all transactions will be recorded in one single cash account. ठीक है, so that we will continue. How much time is left? Okay, so let us continue with this video, then we will similar manner. The only difference being that the name of the account debited is prefixed with the word buy. Let's now consider the posting of a compound entry. अभी नहीं देख रहे इसको, कंपाउंड एंट्री भी कंफ्यूज करेगी। पहले सिंपल एंट्री का आ जाए आपको, पर हम उसको डिस्कस करेंगे कंपाउंड एंट्री कैसे करना है ना। तो समरी देख लो, लेजर इज ए बुक व्हिच क्लासिफाइज ट्रांजैक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस अकाउंट्स, है ना। वेरियस अकाउंट मींस नाम लिखना आपको, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीन अकाउंट, रामलाल श्यामलाल से। लेजर प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर अकाउंट ऑन ए गिवन डेट, इंफॉर्मेशन एज द बेसिस फॉर, ये अब इंपॉर्टेंस पढ़ लिया, why it is important, it serves as a basis for preparation of trial balance and it can help in preparation of financial statements of final accounts, trading and profit and loss account which helps in calculation of profit or loss, and balance sheet which helps in calculation of financial position. Left side of the account is called debit side, it is denoted by debit, and the right hand side is
called credit side denoted by CR. Posting is the process of transferring a transaction from general or a subsidiary book to the respective account in the ledger. Okay. So this is the beginning of the ledger. So we discuss meaning of ledger, importance of ledger, and format of the account, and how the transactions are transferred from general to ledger. That we will continue to discuss in future also, okay, in coming classes. So I am stopping recording and coming back to the meet. Okay. So now if you want to ask anything, you can ask. If you have any doubt, you can ask. Sairam. सर आप जिस टाइप के क्वेश्चंस देते हो उसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो मतलब सब क्वेश्चन वैसे वहाँ कहाँ मिल सकते हैं? बुक में है ना बेटा, सारे कोई बुक करोगे उसमें सब में है ना। किसी भी बुक में, अगर टीएस ग्रेवाल में, डीके गोयल में कोई बुक करोगे उसमें है ना। किसी सर उसमें हाँ, तो सर इसको प्रैक्टिस करके आपको व्हाट्सएप में मैं भेज सकती हूँ? सर मेरे को थोड़े बहुत डाउट्स है ना, आते नहीं है, तो हाँ, आप कैसे भेज सकती हूँ? जो एंट्री नहीं आ रही है तो एंट्री भी भेजना साथ में, तो मैं चेक कर पाऊंगा ना। एंट्री नहीं होगी तो पता नहीं चलेगा क्या एंट्री थी, है ना। तो हाँ एंट्री यस सर। ठीक है, सॉल्व करें। हाँ बिल्कुल, श्योर श्योर, यू कैन सेट, है ना। ठीक है, नाउ यू कैन लीव। साईराम। Sairam sir. सर साईराम साईराम साईराम।